Hello everyone, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. So we'll be starting our session. Assalamu alaikum everyone. Uh, lab, uh, Hello, Assalamu alaikum. So let's start this session. So already have delivered session on Selenium, uh, utilizing Java, but I believe now we have to consider the modern automation frameworks too, considering the new improvements and features which these modern frameworks have brought. So today I'll be giving session on hands-on automation using Playwright TypeScript, and I'll be doing the configurations on VS Code and also show you the live demo of it. So let's start. So first of all, for the laymen's who are just starting with automation, uh, just a small intro regarding the automation thing, that automation is being done. The main objective is to reduce manual effort, especially for the QA engineers who have to test a couple of uh, operations on respective applications, whether they are mobile applications or web applications. Since we are dealing with Playwright, so it focuses on web automation. So the what we have to do is we utilize writing scripts or writing code which is written in respective IDE. Currently, we'll be utilizing VS Code. Apart from that, we also have other IDEs like Eclipse, IntelliJ IDEA, etc. But for VS Code, uh, for Playwright, VS Code is recommended. So basically, a script is written in the respective IDE, which triggers the respective browser, and couple of operations are performed on that respective browser. So to refine this process, we have automation frameworks, and Playwright is one of them. So what is Playwright? Playwright is a free open source web automation framework. It is sponsored by Microsoft and it is being extensively used in the industry. So the first comparison which comes into the mind who have a bit of experience on automation is regarding the comparison of Playwright with Selenium.
since Selenium has been the pioneer of automation. So this battle comes in our mind whenever we discuss the automation use case. Just like we compare React Native with Flutter, same is the case with Playwright with Selenium or Cypress with Selenium. So currently we'll be focusing on the aspects which Playwright brings on the table. Uh, Obviously, every thing has its pros and cons. But currently, I'll be focusing on what Playwright brings on the table and what uh, improvements and what capabilities Playwright has, which Selenium lags behind. So the first thing is built-in drivers. So if we have to perform any action on a specific browser, uh, then we need to have Chrome driver integration. For instance, if you want to perform operations utilizing Chrome browser, so when we are using Selenium, uh, we need to have Chrome driver integration on our project. So this is a bit of comparison. So in Selenium, we have to manually download Chrome driver on your system and uh, write the import statement. This is the import statement. And also we have to define the path of that driver. So not only it increases the manual effort, we have to download it on our system, then provide the path, then we have to import, then we have to write the import statement. Apart from that, it's also increasing the number of lines of the script. So this is the current situation for Chrome driver integration on while utilizing Selenium. But if we talk about uh, Playwright, in Playwright we don't need to do any such kind of manual effort. Everything is being getting take cared of in the backend, uh, and we don't need to add additional lines, additional statements in our script. Our script is only mostly focused on the actions which we want to perform. So, but still in Playwright, we do have to define the choice of the browser. Obviously, if we want to perform our action and we want to restrict it to a specific browser, then we need to have that kind of uh, liberty. So Playwright does provide that liberty. Uh, and I'll show you in the configuration file when we'll jump to the VS Code exactly where these configurations are defined. So this was the comparison of uh, the the driver installation. There is one more thing to add here. That is, it's not only about the built-in drivers. It's also about another manual effort which we have to do, that is compatibility analysis, we can call it. So what we have to compare is a number of things. This is about when we are utilizing Selenium, not Playwright. So this is the disadvantages I am telling you regarding the built-in drivers, which Playwright has, but Selenium lags behind. So we have to do things manually. So the first thing is that we have to take care of the Selenium version with the Chrome browser version. Let me add the statements.
just give me 2 minutes. Just give me a second. So what we have to do is we have to do couple of uh, compatibility analysis. Let me share you those use cases. So these are number of compatibility analysis statements which we have to take care of. So it's not just about defining the Chrome driver path and just writing the import statement. That's not enough. Another issue which you will be facing is regarding the compatibility issues. तो होता ये है कि आपने क्रोम ड्राइवर तो कर लिया इंस्टॉल, लेकिन बीच में आप स्क्रिप्ट चला रहे होंगे, आपको इश्यूज आएंगे, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो रही होगी बीच में, और नीचे आपको वर्जन्स के इशू बहुत बहुत दफ़ा आएंगे, एक दफ़ा नहीं आएंगे, बहुत दफ़ा आएंगे, और आपका आधा से ज़्यादा जो टाइम है वो इन्हीं चीज़ों में ज़ाया होगा कि हम किस किस चीज़ों का कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करें। सेलेनियम वर्जन का क्रोम ड्राइवर वर्जन के साथ है, और आपका क्रोम ड्राइवर वर्जन का क्रोम ब्राउज़र वर्जन के साथ भी है, और उसके अलावा आपका सेलेनियम वर्जन आपके जावा वर्जन के साथ भी है, और सेलेनियम वर्जन विद द टेस्ट रनर टू। जब सेलेनियम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास टेस्ट एनजी या जे यूनिट के ऑप्शन होते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं दे हेल्प अस टू स्ट्रक्चर आवर टेस्ट प्रोसेसेस। तो इनके साथ भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, और अगर वर्जन्स में इशू आए तो आपकी स्क्रिप्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलेगी। उसके अलावा ओएस कंपैटिबिलिटी भी आपने देखनी है, वो तो उसमें भी देखनी है आपने, लेकिन ये भी एक सेलेनियम में भी आपने चीज़ें देखनी है। सो देयर आर around 5 use cases which you have to consider. अच्छा, ये हमारे पास आ गया कंपैटिबिलिटीज का इशू, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा बिल्ट इन ड्राइवर्स का, और इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा यूज केस विच इज फास्ट कम्युनिकेशन। ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये स्क्रिप्ट जो है ये सेलेनियम की है, प्लेराइट की नहीं है। तो इसमें हम कम्युनिकेशन भी देखना चाहते हैं कि कितनी तेजी से हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है, और कितनी तेजी से उसने ब्राउज़र को ट्रिगर किया है, और कितनी तेजी से हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कंसिडर की जाती हैं। अब बात ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड, तो स्पीड में हमें 2-3 चीज़ें देखनी है, वो थोड़ा-सा हमें आर्किटेक्चर भी समझना पड़ेगा। उसके बगैर हमें चीज़ें समझ नहीं आती। मैं उसके लिए आपको चीज़ें शेयर कर देता हूँ। सो प्लेराइट का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह का है। प्लेराइट से स्क्रिप्ट हम डिलीवर करते हैं वेब सॉकेट को। वेब सॉकेट इट्स अ रियल टाइम नेटवर्क कनेक्शन जो प्लेराइट और वेब ब्राउज़र के बीच कम्युनिकेशन के लिए आपके लोकल कंप्यूटर पर ही बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद वेब सॉकेट फर्दर सेंड्स दैट स्क्रिप्ट टू द रिस्पेक्टिव ब्राउज़र। तो ये एक फ्लो है
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पूरा कनेक्शन है ये परसिस्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। कंप्लीट कनेक्शन प्ले राइट से ब्राउज़र तक का ये एक परसिस्टेंट कनेक्शन है। दिस मीन्स के एक बार कनेक्शन ये बन गया तो फिर ये नहीं टूटेगा, ठीक है। उसके बाद बस हमें फिर आइटरेटिवली रिस्पॉन्सेज आएंगे, लेकिन हमारा जो मेन ब्रिज है प्ले राइट से ब्राउज़र तक का वो परसिस्टेंट कनेक्शन एक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेलेनियम में थोड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। सेलेनियम में हम इट्स नॉट अ परसिस्टेंट कनेक्शन। मैं आपको सेलेनियम का फ्लो आपको शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और उसका जो फ्लो है वो ये है। ये सेलेनियम में कुछ ऐसा होता है, सेलेनियम में आप बार बार हर कमांड के लिए आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है सेलेनियम से वेब ड्राइवर की तरफ, और वेब ड्राइवर उस रिक्वेस्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और जेसन फॉर्मेट से फिर वो ब्राउज़र तक हमारे पहुंचती है, ठीक है। और ये परसिस्टेंट नहीं है, मतलब हर कमांड पर, हर स्क्रिप्ट की लाइन पर ये इंडिविजुअली एचटीटीपी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास ये रीज़न हो गया हमारा वाई फास्ट कम्युनिकेशन हैपन्स इन प्ले राइट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास परसिस्टेंट कनेक्शन होता है प्ले राइट में, तो सिर्फ एक दफ़ा कनेक्शन बनाना है, उसके बाद सिर्फ रिस्पॉन्सेज स्कैटर होंगे, जबकि सेलेनियम में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है हमारा क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट। तो क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट हमारी उससे भी मैंने एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास प्लेराइट की एग्जांपल है, हमारे पास सेलेनियम की एग्जांपल है। यहाँ पे देखें कि देर हमें फिर डिफाइन करना पड़ रहा है यहाँ पे क्रोम ड्राइवर के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें मैनुअली स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें डिफाइन करनी पड़ रही हैं। ये हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्ट है, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये सेपरेट फाइल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि अभी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पहले से ही ये हमारे पास पहले से ही प्लेराइट config डॉट टीएस फाइल है, ठीक है। और इसमें ही आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, स्क्रिप्ट बिल्कुल सेपरेट आउट है। और यहाँ पे आपने अपने स्पेसिफिक ब्राउजर को एलिमिनेट करना है, जिसको चाहते हैं वो यहाँ पे रखें, जिसको नहीं चाहते वहां से एलिमिनेट कर दें, बस। स्क्रिप्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरी विंडो सेट नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं
हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज ऑटोमेटिंग। ये हमारे पास एग्जांपल है, प्लेराइट की एग्जांपल है। अब ये सबसे वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है जो प्लेराइट के पास है, दैट इट हैज ऑटोमेट इन इट। सिलेनियम में क्या करना पड़ता है, सिलेनियम में हमें मैनुअली फर्दर वेट्स ऐड करने होते हैं। ये मैनुअल हम वेट करवा रहे हैं 10 सेकेंड्स का, ठीक है। प्लेराइट में ऐसा कुछ नहीं है। प्लेराइट तब तक वेट करेगा जब तक वो एलिमेंट आपको अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पे, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं या कोई टाइटल है वेबसाइट पर या कुछ भी है। तो जब तक वो प्रॉपरली लोड नहीं हो जाएगा, प्लेराइट वुड वेट फॉर इट, ठीक है। दिस इज अनदर एडवांटेज। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं some of the powerful features, which one of them is screenshot. कि when you are doing some testing, we need some screenshots of the process. तो सिर्फ ये कमांड हमें पेज डॉट स्क्रीन शॉट ऐड करनी है, ठीक है। फर्दर कुछ ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग को देखें तो देन वी हैव टू import number of things, then also define those use cases in the script by long statements। तो ये सारा कोड को जंकी कर रहा है कोड को, ठीक है। और रीडेबल कोड तभी होता है जब उसमें कम लाइंस हो, और जितनी कम लाइंस होंगी उतनी ईजियर होगा एक लेमैन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑन VS Code। in this we'll be doing using coffee analogy, ठीक है, ताकि चीजें समझ जाएं। अगर मेरी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन हो तो काइंडली बता दीजिएगा। Q&A का ऑप्शन, just give me a second. Okay, so the first step is installation of Node.js. So it provides a runtime environment for executing JavaScript, TypeScript on your computer that is outside the browser. तो ये सारे जो प्रोसेस हम ऑटोमेशन के कर रहे हैं, that is outside the browser, ठीक है। if you have any questions you can ask on the Q&A, ठीक है। मैं I'll take the queries। और इसकी एनालॉजी हम रखते हैं कि जब पहला स्टेप हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js, दैट इज लाइक बाइंग अ कॉफी मशीन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमने कॉफी मशीन खरीदी, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इट ऑल्सो enables npm फॉर मैनेजिंग पैकेजेस एंड रनिंग कमांड्स। बहुत मेजर कमांड्स जो हम रन करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ the Node.js, the node package manager which comes with the installation of Node.js। so npm कमांड से हम वो चीज़ें इंस्टॉलेशन करेंगे और जो भी फर्दर प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 है हमारा सेटअप अ न्यू प्लेराइट प्रोजेक्ट। सो इफ वी स्टार्ट विद a demo, a new terminal, let me share my camera tool। okay, so we have arrived in our VS Code। now what we have to do is let me open the slides। so the second step is that
we need to have a directory. So I have already made a directory that is called demo, और मैं उस directory में ही हूँ. So this step is like setting up your coffee shop. ठीक है. This sets up a dedicated workspace for writing and running playwright tests. तो हम वापस जाते हैं. And now we'll focus on so the first step has been performed. Now the second step is the third step is initialize playwright. Now this is the main thing, and it is like buying a coffee starter kit with the machine, with the preloaded coffee and the filters and the additional stuff. So ये command जो है, that is what will bring everything on the plate. ठीक है. It technically what happens is it bootstraps a new playwright project. It creates a project structure with configuration files, तमाम necessary files available करता है आपके project में. It also prompts you the choice between TypeScript and JavaScript, and it provides a ready to use environment for browser automation testing. ठीक है. अच्छा, अब हम वापस जाते हैं VS Code में और let's execute this command. Okay, ये मुझे पता था ये देगा. This is a bit of security security policy. So there is a command which we have to execute. This is the command in order to make sure that we enable the npm init playwright latest command. All right, now we can clear and then proceed with okay, so it prompts the choice between TypeScript and JavaScript. And once you have clicked on TypeScript, then there will be another prompt. You just have to press enter, and then the installation would start. Currently, I will not do it since I already have installed Playwright on another project. So once the installation is complete, we'll get all the necessary files, the configurations added in our project by default. And then we just have to start executing our test script. So the fourth step is optional. You have to install Playwright test. अच्छा, ये step हमने तब करना है जब if you have mistakenly deleted some important files like node modules folder or major files like package log.json. ठीक है. और अगर कुछ मसला हो गया, कुछ चीजें मिसिंग हो गई हैं and you think कि आपकी चीजें मिसिंग है आपके प्रोजेक्ट में, then you can come execute this command and it will bring back all those necessary files and structures. तो ये optional है, worst case में ही इसकी जरूरत पड़ती है. And it is like buying extra coffee beans separately in case you need a refill. ठीक है. The fifth step is optional. You have to install the Playwright text extension in VS Code. The purpose is to enhance your development experience by integrating Playwright features into VS Code. It provides a test explorer, inline debugging, and code analysis for running tests. कुल मिला के it's like a coffee making digital assistant. कुछ cool features आपको ला के देता है. For instance, this button, the green button,
this comes with the extension which we install. So ये individual test cases execute हम कर सकते हैं using this. Apart from that, on hover descriptions, जिस चीज पे भी आप hover out करेंगे, it will provide some relevant details regarding it, regarding the methods behind it, and all the technical details. ठीक है. अच्छा, ये हमारा हो गया extension, और the last step is to execute. So the final step is to execute our script. So this is the command which we use. So I'll open the terminal. And अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ जी, तीनों ब्राउज़र हैं. So 3 windows should get open. Okay, it's again इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों एरर शो करता है इन आवर नेक्स्ट सेशन. अभी ये थोड़ा बेसिक चलेगा, because this is just an intro to Playwright. फर्दर हम डिटेल में चलेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है इसमें. अब ये रनिंग 6 टेस्ट, इसका मतलब हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है. Okay, it's trying to trigger things. ठीक है. इसने ये भी इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सटेंशन जो हमने डाउनलोड करी थी, ये भी उसी की बदौलत है जो हमें ये प्रॉम्प्ट कर रहा है एरर, विच इज़ अ गुड थिंग कि हमें बता रहा है कि उसको ये एलिमेंट नहीं मिला. ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं. इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं और हम बाहर आते हैं. अच्छा, ये हमारी जो टेस्टिंग हुई है, ये आपने नोट किया होगा कि कोई भी ब्राउजर ट्रिगर नहीं हुआ. उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. उसका रीजन है कि जब हम देर आर टू, बल्कि नहीं हो चुका है, उसने किया है. अच्छा, उसने सिर्फ रिजल्ट्स शो करवाए. ठीक है, जो हमने अभी कमांड एग्जीक्यूट कराई है, सिंस इट वाज हीडलेस मोड. हीडलेस मोड में ये होता है कि हमारा ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन वो नहीं शो करवाता, लेकिन बैकएंड पे वो टेस्ट चला रहा होता है, लेकिन हमें इंटरेक्टिवली लाइव नजर नहीं आ रहा होगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें ये कमांड यूज करनी पड़ेगी. तो हम VS कोड में जाते हैं दोबारा और उससे कहते हैं कि भैया ये कमांड चलाओ. ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ क्रोम पे चलानी है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या मैं जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन दोनों को डिसेबल कर देता हूँ. ठीक है, वापस गए हम अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट में और हमने कहा कि भैया अब इसको चलाओ.
ये हमारा ब्राउज़र ट्रिगर हुआ है और हमारा टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट हो चुका है और फिर ब्राउज़र खुद ही बंद भी हो गया। ठीक है, तो ये दिस शोज द इंटरेक्शन विद क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, ये हमारी स्क्रिप्ट थी। 2 टेस्ट केसेस मैंने डिफाइन किए हुए थे, तो उसने उनको ट्रिगर किया है। So yeah, this was the short demo regarding automating your scripts. प्लेराइट पर और भी चीज़ें काफ़ी हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आप और कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स थी कि आपने सेटअप किस तरह करना है। इसके बाद हम प्रॉपर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यूटिलाइज करेंगे, ऊप के प्रिंसिपल्स यूज करेंगे इन आवर कोड, जिसे हम रियल टाइम एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना सीखेंगे। रियल टाइम एप्लीकेशन हमारी बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन CRUD ऑपरेशंस। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में द फर्स्ट थिंग इज टू डू स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, तो उसमें हमारे CRUD ऑपरेशन आ जाते हैं, तो वी हैव टू ऑटोमेट दोज थिंग्स। तो उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर रखना है, मॉड्यूल्स होंगे, अगर 5 मॉड्यूल्स नहीं है, अगर 50 मॉड्यूल्स हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक फाइल के अंदर सारे के सारी स्क्रिप्ट्स लिखूं। That is not a good practice. So we need to follow the OOP principles. We need to define, we need to structure things, ताकि अगर कोई बाद में प्रोजेक्ट टेक ओवर करे तो उसके लिए चीज़ें एडजस्ट करना आसान हो। So yeah, this was all regarding playwright automation. I hope you have got some basic idea, and I'll be ending with this verse. Mumalaina ilal mubin, और हमारा काम था पहुंचा देना। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और कुछ क्यूरीज हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Allah Hafiz. If anyone has any query, you can ask in the Q&A. I believe we don't have any queries. So thank you very much, everyone.
बंद कर दो। दो ऑन है, उन्होंने मामा ने किए होंगे, जाके बंद करवाओ। उनके नाम कैसे लग गए? एक हो गया बंद, अभी कौन कौन सा है? लैपटॉप तो बंद कर दिया मैंने, एक और ऑन है।